Hi everyone, welcome to my channel. And in this video, we are going to discuss another chapter, The Portrait of a Lady by Kushwant Singh. And this chapter has been prescribed for the second year students of CHSE. Okay, now let's begin. Okay, now before we begin with this chapter, now who's Kushwant Singh exactly? He is an Indian English writer and journalist, and he used to, send in writings to Illustrated Weekly of India. Later on, he obviously became the editor of the top leading newspapers of India, and he has written several books. His books always carry a hint of satire and irony, and are always, you would love to read those books. So humorous. And then one of his famous books, Train to Pakistan, is a prominent book in the field of partition literature. Okay, so that's the basic idea you need to know about Kushwant Singh. Now, this chapter, the portrait of a lady, the lady here refers to the grandmother of Kushwant Singh, and portrait means a painting. So basically, what he has done, he has painted his grandmother, a sketch of his own grandmother, right from childhood until his adulthood. Okay, now in unit 1, we are going to see that the writer introduces his grandmother. Okay, and how is she? She was slightly bent, short in height. Okay, so just like our regular grandmothers, वो थोड़ी सी height उनका कम था और उनका जो face था, it was covered with wrinkles. यहाँ see criss cross of wrinkles, मतलब full of wrinkles. Obviously, she is an aged woman, तो wrinkles तो है ही, होना चाहिए. एंड देन वो ना एक वाइट स्पॉटलेस साड़ी पहन के होती है एंड देन शुड बी कैरिंग अ रोजरी बीड ऑन वन हैंड. रोजरी बीड क्या होता है? जो आप माला जपते हो भगवान का नाम लेकर, और उनका दूसरा हाथ कहाँ पे होता है? कमर पे. ओके, सिंस शी वाज स्लाइटली बेंट, so yeah, you can obviously imagine how she would walk around in the house. And she had silver hair. सिल्वर सिटीजन हम बोलते हैं, जेरियाट्रिक सिटीजन हम बोलते हैं, सीनियर सिटीजन हम बोलते हैं टू समवन whose age is above 60 65. ओके, एंड शी वाज कॉन्स्टेंटली मम्बलिंग अ प्रेयर. मतलब आप देखोगे उनका जो लिप्स है, इट वुड बी मूविंग. आपको सुनाई नहीं देगा कि वो क्या, आपको मतलब तो राइटर को उनको सुनाई नहीं देता था कि वो क्या प्रेयर कर रही थी, बट ही कुड सी कि द लिप्स वर कॉन्स्टेंटली मूविंग. And he compares her to a winter landscape. If you have ever seen movies of Shah Rukh Khan, उनके हर मूवी में एक गाना होता है जो कि रिकॉर्ड होता है स्विस एल्प्स में. थोड़ा सा स्नोफॉल होगा, स्नोफॉल के बैकग्राउंड में वो डांस करते रहेंगे. सो what do you feel when you see those songs? You feel so romantic, you feel so nice, so you feel at peace. तो हमारे जो राइटर हैं खुशवंत सिंह, ही इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग दैट व्हेन आई लुक एट माय ग्रैंडमदर, वो एक पोर्ट्रेट थी. शी वॉज अ स्टैचू ऑफ पीस. शी लुक लाइक अ स्टैचू ऑफ पीस, moving statue of peace. The writer can never imagine her younger self, and अभी वो ग्रैंडमदर है तो कुछ ना कुछ तो बोलेगी अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में. तो वो बोलती रहती थी कि मैं ऐसे कंचा खेलती थी या फिर गिल्ली डंडा खेलती थी. और हमारे जो राइटर है, ही नेवर बिलीव्ड इट. व्हाई? क्योंकि वो ना बचपन से देखे हुए अपने ग्रैंडमदर को, बचपन से ही अपनी ग्रैंडमदर जो है वो एजेड है, एक ओल्ड लेडी की तरह है. तो उनके लिए ये बिलीव करना आसान नहीं था कि एक वक्त होता एंड वो उनकी जो ग्रैंडमदर है, शी वुड बी a young girl playing around. So that would be very unimaginable for our writer. And he also saw the portrait of his grandfather on the shelf. And वो जो portrait है वहाँ पे वो grandfather, he looked like more than 100 years old. तो राइटर का जो इमेजिनेशन है ना, वो काफी वाइब्रेंट है in this text. Now, in unit 2, he talks of
his childhood days in the village, which he had spent in the company of his grandmother. तो as a child, जो हमारे राइटर के पेरेंट्स थे, they had gone to the city to work and they had left behind their child with the grandmother in the village. तो बच्चे को सुबह से लेके रात तक उनका जो सारा काम होता था बच्चे का सॉरी जो भी सारा काम होता था बच्चे का, who was handling all that? The grandmother. Okay, she used to wake him up for school, she used to get him ready, and throughout she used to sing song her prayers, ताकि जोर जोर से she used to pray, ताकि जब वो गाए तो कुछ ना कुछ हमारे राइटर के मेमोरी में स्टोर हो जाए. And then she used to slather butter or ghee and sugar on stale chapatis for breakfast and pack the rest of the chapatis to feed the stray dogs. Okay, फिर वो बचपन में ना आजकल तो बच्चे तो स्लेट क्या है वो पता नहीं है. They directly start using copies and iPad. But initially, even I also used to, I started with my education, I started using a slate first. So slate, she used to prepare that slate and whatever other जो भी रिक्वायरमेंट्स थे वो सब चीजें प्रिपेयर करके दोनों ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन वो निकल जाते थे टू द नियर बाय टेम्पल. टेम्पल में जाके द ग्रैंडमदर यूज्ड टू सिट इनसाइड द टेम्पल प्रेइंग टू द लॉर्ड. और टेम्पल से अटैच्ड होता था एक स्कूल. स्कूल में टेम्पल का जो पुजारी है स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाता था. क्या पढ़ाता था? बहुत ही बेसिक अल्फाबेट्स एंड प्रेयर्स. ओके, और फिर आफ्टर दैट both grandmother and grandson they used to return, and on their way back home they used to feed the dogs the stale chapatis. In unit 3, the writer is talking about the growing distance between him and his grandmother as they moved from the village to the city. तो जब पेरेंट्स सेटल डाउन हो गए सिटी में, उन्होंने क्या किया? दे कॉल्ड द ग्रैंडमदर एंड देयर सन टू द सिटी कि आप आ जाओ, अब हम यहाँ पे घर ले चुके हैं, हमारा काम जो है स्टेबल हो चुका है, सो आप आ जाओ, यहीं पे रहोगे. सिटी में जाने के बाद लड़का जो है he got admitted to an English medium school and he started to learn obviously the English words, a little bit of maths, a little bit of geography and history, जिसके बारे में हमारे ग्रैंडमदर को कुछ भी नहीं पता था. Okay, both of them shared a single room, लेकिन उनका जो bonding था ना, that had weakened. Grandmother never had any kind of dogs in the neighborhood to feed, so she decided to feed the sparrows, जो कि घर के पीछे backyard में आ रहे थे. She decided to feed them, and since she was unable to understand any kind of English or arithmetic or geography or history, तो slowly पहले वो पूछते थे, पहले इनिशियली वो थोड़ा बहुत पूछ रहे थे अपने क्या पोते को कि आज स्कूल में क्या हुआ, दोस्त ने क्या किया, क्या नहीं किया, तुमने क्या किया. पर स्लोली वो पूछना भी उनका बंद हो गया. क्यों? क्योंकि उनके पल्ले कुछ नहीं पड़े, कुछ समझ में नहीं आया. एंड शी ऑल्सो डिसलाइक्ड द फैक्ट दैट द ग्रैंडसन वॉज टेकिंग लेसन्स इन म्यूजिक. टू हर म्यूजिक वॉज मेंट फॉर लोली क्लास पीपल and she showed her disapproval by reducing their conversation. तो ग्रैंडमदर को ये पसंद नहीं था कि कोई वेस्टर्न म्यूजिक सीखे. वेस्टर्न म्यूजिक को she compared it with the job of harlots, with the job of lowly people. Okay, अब स्कूल खत्म हो गया. स्कूल खत्म होने के बाद हमारा ग्रैंडसन जो है joined the university. यूनिवर्सिटी यानी कि हॉस्टल. And the grandmother was left all alone in the house. Okay, she was left all alone. अब घर में अगर रहेंगे तो ठीक है, घर में बाकी सब members भी हैं, but other members too are busy, right? They're busy with their jobs, they're busy with whatever things they're doing. So grandmother was usually left alone, and all she did during her alone time was to feed the sparrows and pray. Okay. She accepted her seclusion with resignation. मतलब she understood that she is someone who's above, let's say, 70 years. Okay, let's say she is the only one who is a senior citizen in the family and others are working. Others have a life. कोई student है तो कोई
वर्कर है, गवर्नमेंट सर्विस वर्कर भी हो सकता है, प्राइवेट सर्विस वर्कर हो सकता है, बट वर्कर है. सो हर किसी के पास वक्त नहीं होगा टू स्पेंड विथ ग्रैंडमदर. And grandmother accepted the fact and she remained doing things that she liked in order to spend her time. Next, in Unit 4, the writer talks of how he was welcomed back by his grandmother and her last moments before she left for her heavenly abode. So the writer, अब देखो लास्ट यूनिट में क्या था, राइटर हमारा जो है वो यूनिवर्सिटी में था, एंड फाइनली आफ्टर he was done with the university, he decided to go abroad for his studies. तो अब पूरा फैमिली जो है उनको छोड़ने के लिए गए स्टेशन, क्योंकि वो स्टेशन से एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे और दूसरे शहर में वो एयरपोर्ट से निकलेंगे बाहर. So at the station, when the entire family was seeing him off, grandmother planted a kiss on his forehead. और उनको लगा कि शायद ये लास्ट कांटेक्ट होगा मेरा और मेरे ग्रैंडमदर के साथ. बट to his utter surprise, 5 साल के बाद when he returned, the grandmother was still alive. Okay, and she was extremely happy when she saw her grandson after a long time. She fed the sparrows more vigorously with light rebukes. ठीक है, थोड़ा थोड़ा डांट के, जैसे कि हम घर वालों को बच्चों को डांट डांट के खिलाते हैं, डांट के प्यार जताते हैं. Similarly, she was doing that with the sparrows, and in the evening what she did कि नेबरहुड की सारी जो लेडीज थी, she collected all those ladies and she started to sing using a drum until she exhausted herself. Finally, अगली सुबह क्या हुआ, अगली सुबह तबीयत खराब हो गई एंड डॉक्टर आया. डॉक्टर सेड दैट आपको रेस्ट करना चाहिए. एंड व्हाट शी सेड, शी और देखो अब एज हो गया है, डॉक्टर सेड कि आपको रेस्ट करना चाहिए, तो फैमिली मेंबर्स कंसर्न हो गए एंड फैमिली मेंबर्स सराउंडेड हर, sat there surrounded her and she said कि तुम सब निकलो कमरे से बाहर निकलो, मुझे अकेला छोड़ो ताकि आई कैन रिमेम्बर गॉड. क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये जैसे कि एक फोरबोर्डिंग आ गया था कि probably these are her last moments and she wanted to spend her last moments remembering the name of God. And finally ऐसे करते करते she died. उसके बाद her body was laid on the ground covered with a shroud while the family left to make arrangements. And when they returned, they saw कि उनका जो बॉडी था जो कि जमीन पे वो रख के गए थे, चारों तरफ there were sparrows, but none of the sparrows were making a noise. तो हमारी कुशवंत सिंह के जो माताश्री हैं, she decided to feed the sparrows with the bread pieces, but the bread pieces किसी ने कुछ accept नहीं किया. It is as if the sparrows were sad with the departure of the grandmother, and also they were trying to show their sadness or the sorrow by not eating, by not making a noise. And finally, जब grandmother's body left the house, the sparrows too left the house. Okay. Now there are certain points that you need to remember while reading this chapter. That is, one, you need to focus on the relationship that the writer shared with the grandmother right from childhood until adulthood, and how the relationship changed with time and distance. Okay. दूसरा जो आपको समझना चाहिए वो ये है कि you need to know the character sketch of grandmother. वो कैसी दिखती थी, वो कैसी चलती थी, वो क्या white साड़ी पहनती थी, and how the grandson felt about his grandmother. Then you need to know कि उनका जो था that she belonged to an old school of thought. कि she belonged to that old school of thought कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे क्लासिक चीजें पसंद है, मुझे वेस्टर्न चीजें इतना ज्यादा पसंद नहीं है. I don't like, I abhor Western culture and Western tradition. She was like that, and obviously she was highly religious. And the most important major thing that as a student you need to focus while reading this chapter is the relationship that she shared with the other creatures like the dogs and the sparrows. ठीक, चलो
बाकी तो आपको पता है कि ग्रैंडमदर के बारे में टेक्स्ट है, तो ऑब्वियसली that has got something to do with your grandparents as well. The writer has decided to, through this text, establish a relation about the relationship that he shared with his grandmother. कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस थोड़ा हमारी जिंदगी से भी होता है कि हम कैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं, व्हाट रिलेशनशिप वी शेयर विद देम, और अब तक अगर चीजें जो है अगर वो सही स्टेट में नहीं है, सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू reconnect with your grandparents and make memories with them. Okay, chalo, thank you so much.